Hello students, welcome to our lecture number 3 of our chapter electric charges and fields. So in lecture number 2 we have discussed regarding your methods of charging or activation of charge, methods of activation of charge, that is conduction, induction and friction. So in lecture number 3 basically we will discuss regarding Coulomb's law. So Coulomb's law total theory आज आम डिस्कसन कर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 रे रिगार्डिंग Coulomb's law तो सब भेराइटीज न्यूमेरिकल अच्छी आम सल्व करवा बेसिक्स टू एडवांस नहीं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो Coulomb's law. ओके, सो Coulomb's को फुल ना कौन थे जान चार्ल्स ऑगस्टिन डी Coulomb. Charles Augustine D. Coulomb stated that magnitude of electric force गोटे चार्ज आ गोटे चार्ज उपर कौन एक्सर्ट कर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर. सो मैग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज F exerted by one electric charge on the other can be determined by torsion balance. डिवाइस नाटा मन रखिबो torsion balance, TORSION balance. ओके, अच्छा हम गोटे समरी बर्तमान लिखा इंटराक्शन बिटवीन टू चार्जेस रो छोट समरीटे लिखा से आम 1 मार्क क्वेश्चन भी आसपे सीएचएस रे. देख समरी ऑफ इंटराक्शन बिटवीन टू चार्जेस. ओके, सो ये आम कौन देखो लिखुची इटरनली चार्ज Q1, इटरनली चार्ज Q2, देन product of Q1 and Q2, then लिखली force. सपोज मु फास्ट नेली Q1 नेली पॉजिटिव चार्ज, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज. सो Q1 इंटू Q2 कौन हम पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स प्लस इंटू प्लस प्लस, पॉजिटिव मीन्स इट इज ग्रेटर दैन 0 and like charges repel each other, the force involved between them is repulsive. Clear? सपोज दुटा को नेगेटिव चार्ज निगला. सो प्रोडक्ट कौन हम आमर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, that is also greater than 0. So force कौन आसला again repulsive. Yes, next suppose Q1 है positive, Q2 negative, कौन हम Q1 into Q2. So plus into minus, that is minus, that is also less than 0. So the force involved between them is attractive. Yes, and let Q1 is negative and Q2 is positive. So in this case the same answer you will get, that is less than 0. Product of Q1 and Q2 less than 0 and force involved between two charges is attractive in nature. So remember Q1 Q2 जेतले greater than 0 होजी, the force is repulsive in nature, and Q1 Q2 जेतले attractive हो जाउची less than 0, then force involved between them is attractive in nature. एटा गोटे छोटो समरी थिला हम ता विषय रे रिगार्डिंग योर इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस. अच्छा, बर्तमान आम Coulomb's law एक्सप्रेशन को आसवा. सो गिव हेडिंग Coulomb's law ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बहुत स्लो मार्च आम करुचे. सो इच डे लेक्चर को कंप्लीट करने ट्राए कर. Coulomb's law ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज बहुत भल कॉन्सेप्ट देखिए जान तुम. ओके, या तो आम बहुत भल से जानी एक्चुअली यार एक्सप्रेशन ये सब भल से जानी तुम. कौन suppose these are two charges. Yes, one is your Q1, another one is Q2, and their center to center separation kete, let it be R. R is the center to center separation between two charges. Okay, so Q1 Q2 कौन कला, suppose both are think that both the charges are
like charges or similar charges. So they will repel each other. जन जन को repulsive force repel करेंगे. So Q1 Q2 पर जति force पकेबो Q2 also exert same amount of force upon Q1. Okay. F12 कौन F21 कौन आम लैटर तार रिप्रेजेंटेशन ध्यान देवा. बर्तमान कहला कौन आम डिस्कसन करिबा एफ रो मैग्नीट्यूड उपर डिस्कसन करिबा. यस. सो स्टेटमेंट कौन कहूँ देख बहुत लंबा स्टेटमेंट हो पारे तापर तक जो मैथमेटिकल आम एक्सप्रेशन दबा बहुत भल लगे. कौन स्टेटमेंट कह स्टेटमेंट कहला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ताको लिखा पड़ो. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion between or repulsion between two stationary point charges. या सब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आज कहब है. टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. बहुत बड़ा देखा ना स्टेटमेंट किसी नहीं. So square of distance between them when placed in free space. Free space means air भाव. Okay, free space means air or vacuum. And always remember this force acts along line joining the centers of two charges. Okay, देखो तब हमें मैथमेटिकली केमती में एक्सप्रेशन दबा. नाउ सी दिस थिंग ये जो फोर्सटा ता मैग्नीट्यूड ओनली हम कैलकुलेट कर परिबा फ्रॉम कूलम्स लॉ. सो यू कैन मेंशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट इज सिंगल वर्ड में कह परिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. ओके. सो कौन कहला ए फोर्स रो मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ओके. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them. Okay. So from 1 and 2 we can write F proportional to Q1 magnitude into Q2 magnitude divided by R square. Okay. proportionality symbol को उठे के equal symbol प्लेस करिवा ताले गोटे proportionality constant हमको multiply करिया पड़िबो. So remember F is equals to we can write स्मॉल के ई कौन मुझे लिखिले एटा स्मॉल के ई. ओके. Q1 into Q2 mod divided by R square. Yes. चलो what is small ke? Small ke or you may represent it like small k. कौन है सरा? This is your Coulomb's constant. Okay. This is called electrostatic force constant, proportionality constant or electrostatic force constant, or it is called Coulomb's constant. Yes, and remember it depends upon nature of medium. केमती डिपेंड कर मीडियम नेचर उपर बर्तमान आम डिस्कस करिया. ओके. So this is our general formula. F is equals to Ke or simply K small k Q1 Q2 by R square.
दैट मीन्स मैग्नीट्यूड नियाज माने विदाउट साइन मु बार बार कहबी विदाउट साइन जेथर कहि तुम जानो जोटा मैग्नीट्यूड ओके यस आई होप अप टू दिस नो मोर डाउट यस सो बर्तमान आम बेसिकली डिस्कसन करवा कौन ए के ऊपर डिस्कसन हम बर्तमान देखो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के so k is equals to or ke is equals to after cross multiplication you can write f r square by q1 q2 f r square by q1 q2 yes or no so now we can write the unit and dimension of this k okay unit first is unit of ke okay kete hobo force ro SI unit hela newton r is distance that is meter square divided by q1 into q2 coulomb square so newton meter square per coulomb square is the SI unit of ke yes next dimension k ro dimension that is f dimension into r dimension square divided by q1 dimension into q2 dimension f dimension 1 1 minus 2 then r l1 tar square l2 divided by q1 hela a1 t1 q2 hela a1 t1 that is a2 t2 so after solving you can write m1 yes l power 3 t power minus 2 minus 4 a power minus 2 so 1 3 minus 4 minus 2 this is your dimension of what dimension of ke or small k up to this clear yes so এটা হল আমার কোন কুলম্বস কনস্ট্যান্ট আর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কনস্ট্যান্ট আচ্ছা এর ভ্যালু কেতে ভ্যালু অফ কে ইউ রিমেম্বর তার ইউনিট হল নিউটন মিটার স্কয়ার পার কুলম্ব স্কয়ার ইটস ভ্যালু ইজ 9 into 10 to the power 9 নিউটন মিটার স্কয়ার পার কুলম্ব স্কয়ার ওকে এটা আমি এক্সপেরিমেন্টালি ফাইন্ড করা হয়েছে 9 into 10 to the power 9 নিউটন মিটার স্কয়ার পার কুলম্ব স্কয়ার আচ্ছা एट बर्तमान आम देखा ये के विषय डिस्कसन करवा डिटेल्स रे ओके अच्छा के टा को रिप्रेजेंट आम केमती करवा के इज इक्वल्स टू और के ई और स्मॉल के इज इक्वल्स टू लिखी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यस एटार वैल्यू है के 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ताले ये एक्सप्रेशन रे सब डिफिकल्ट जिनस हमर इप्सिलॉन नॉट को हम जानिने ओके सो व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट is the जानथिबो निहाती इलेक्ट्रिकल कोन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या कोन कहबा इप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तले वर्तमान में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करबा का ऊपर इप्सिलॉन ऊपर परमिटिविटी कोन तापर हम जिबा एब्सोल्यूट परमिटिविटी देख मुझे कौन परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहीपर दिस इज इप्सिलॉन नॉट ओके अच्छा जदि हम वैल्यू बाहर करवा देख लो यार एक्सप्रेशन कौन देखले आम के इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू केते 1/4 पाई के ई ओके और स्मॉल के जहाँ भी लिख स्मॉल के रिप्रेजेंट कर बस यदि के ई लिखा असुविधा हो सो 1 डिवाइडेड बाय 4 into 3.14 into के ई रो वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 ओके सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यदि हम सॉल्व करवा डायरेक्ट या वैल्यू मन रखा पड़ो तुमको 8.854 into 10 to the power -12 यूनिट रिवर्स हो गला कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो तार यूनिटा के रो यूनिट अपोजिट है ताले इप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन जदि मैं पचारि डायमेंशन ताले जहाँ लिखाई प्लसटा माइनस कर दो माइनसटा प्लस कर ये केते लिखाई 1 3 -4 -2 एटा जो -1 -3 4 2 देखो सो m -1 -3 4 2 ओके अच्छा तो बर्तमान आम देखिए गोटे वार्ड आसला आम परमिटिविटी यही वार्ड विषय डिस्कसन करवा देखो धीरे धीरे तुमको इजी हो कॉन्सेप्ट अच्छा लेट्स डिस्कस अबाउट परमिटिविटी ऑफ मीडियम यस ओके हम हेडिंग दबा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम
देख स्टार्टिंग जब आम बोरिंग फिल करवा चैप्टर को एंड पर्यटन आम पहुँचा बहुत डिफिकल्ट हम ओके कारण ये चैप्टर में वेक्टर कॉन्सेप्ट गुड़ा लगे न्यू कॉन्सेप्ट तुम टिल ना से गुड़ा विषय किसी जान केवे भी ओके 11th क्लास आम जो थी आम रियलिस्टिक एग्जांपल देखिए आम बुझीपारे ये चार्ज कथा बर्तमान पढ़ाऊँ तुमको किसी ना किसी जिन बर्तमान नुआ आडप्ट करा पड़ो ओके सो दैट या पर जो चैप्टर सब अच्छी ना तुमको कन्वीनियंट हो तुम बुझापी ओके तुम जेकोसी स्ट्रीम हो इंग्लिश मीडियम हो कि ओडिया मीडियम हो किसी फरक पड़ोनी पाठ गोटे रस तो तुम देखी एनसीईआरटी सिलेबस ही फॉलो कराऊँ बोर्ड रे हमरो यस सो व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम परमिटिविटी डिनोटेड बाय इप्सिलॉन रिमेंबर इट इज डिनोटेड बाय इप्सिलॉन केमती सिंबल दउची सी लिखिबो तारे एमती ओके सो दिस इज योर इप्सिलॉन अच्छा सो व्हाट इज परमिटिविटी गोटे एग्जांपल बर्तमान तुमको दूसरी परमिटिविटी है केते परमिशन से तुमको दब किए दब परमिशन फॉर एग्जांपल जब आम बुझा बर्तमान तुम गोटे स्कूल सपोज पढ़ुच गोटे स्कूल एक्स गोटे स्टूडेंट बर्तमान कौन अच्छी जेको गोटे प्राइवेट स्कूल बर्तमान पढ़ुची गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुची सपोज गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुची ओके गोटे स्टूडेंट अच्छी एक्स से गवर्नमेंट स्कूल पढ़ला दुष्ट हो सो गवर्नमेंट स्कूल तार दुष्टामीटा को से प्रिंसिपल जी आलाउ करुले कि क्लास टीचर जी आलाउ करुले जदि से एक्स स्टूडेंटा बर्तमान प्राइवेट स्कूल को पलि आसो ओके तार से हरकतटा से तार क्लास टीचर केते अमाउंट रे एक्सेप्ट करुच्ची दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी बुझेगा नहीं सो स्कूल चेंज है मैंने ओबियसली क्लास टीचर चेंज है एंड रिमेंबर क्लास टीचर चेंज है मैंने क्लास टीचर तार हरकत को और तार बदमाशी को केते अलाउ कर दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी बुझेगा जो तुम एमती कहीपर मेजर ऑफ हाउ वेल आम एक्सप्लेन करिपरिबा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम मीन्स हाउ वेल द मीडियम अलाउज और परमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट बुझेगा फॉर एग्जांपल मुझे कौन कहली एग्जांपल ठीक से शुण से पिलाटा प्रिंसिपल को जी इन्फ्लुएंस कर जिते अधिका इन्फ्लुएंस कर से अधिका हरकत कर दुष्ट हो पार अदरवाइज आम उल्टा कथा कहवा प्रिंसिपल कि क्लास टीचर जी आलाउ करदे दुष्ट होगापी से अनुसार से दुष्ट हम सो दुईटा सेंटेंस मुझे कहली आइदर पिलाटा प्रिंसिपल को कौन कर इन्फ्लुएंस कर ओके सो एग्री होगा जी प्रिंसिपल आलाउ करदे चुपचाप रही किसी कहीपारे बुझला नहीं अंडर द प्रेसर तो से दुष्टामी हम अदरवाइज प्रिंसिपल के आलाउ कर दुष्ट होगापी जदि आलाउ करदे कि प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट नहांती ताले से अधिक दुष्ट हम प्रिंसिपल कौन थोड़ी अलाउ करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट जदि नथिबे से अधिक दुष्ट हम एक्जाक्टली स्टूडेंटर हरकत को प्रिंसिपल अलाउ करंतु किंबा आम कहीपर कौन स्टूडेंट हरकत को केते अमाउंट रे प्रिंसिपल अलाउ कर दैट इज द परमिटिविटी सो आम सेंटेंस लिखिपर सेमती हाउ वेल द मीडियम allows or permits electric field to pass through it एटा हम कहवा आमर कौन परमिटिविटी ओके और आम एमती लिखिपर द डिग्री टू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फ्लुएंस द मीडियम the degree to which the electric charge influence the medium is called permittivity okay bas and epsilon remember epsilon permittivity depends on medium always remember so एबे हमें शिखिगले कौन परमिटिविटी मीनिंग कौन संभव हमें क्लीयर है अच्छा ये परमिटिविटी एक्चुअली जो डिपेंड्स ऑन मीडियम कहली दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम यस इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम यस अच्छा तो केमती इप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करा जाए इप्सिलॉन मीडियम दैट मीन्स जेको गोटे मीडियम परमिटिविटी आम रिप्रेजेंट करवा इप्सिलॉन रे जनरल रिप्रेजेंट करो और इप्सिलॉन एम कि मुझे सिंपली लिखली इप्सिलॉन तार एक्सप्रेशन है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर यस
तो ये तीनटा मीनिंग कौन तीनटार मीनिंग कौन फास्ट है इप्सिलॉन मीनिंग कौन कहली परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा इप्सिलॉन नॉट कौन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इप्सिलॉन आर कौन रिमेंबर इप्सिलॉन आर टाइप कह तुम रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ओके और या कह डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ताकू रिप्रेजेंट करियो कैपिटल के और इप्सिलॉन आर को लिख पारे हमें कैपिटल के और मन रख अदरवाइज इट इज कॉल्ड बढ़िया ना कहूँ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ओके SIC स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी समहाउ क्लियर है अच्छा सो रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इप्सिलॉन आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बस सो बर्तमान आम देखिले जो दुईटा चार्ज व्हेन टू चार्जेस आर इन एआर से टाइम रे कौन है इक्वेशन के आसला F इज इक्वल टू KE दैट मीन्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बर्तमान आम लिखा देख कंपैरिजन करदे इजिली तुम बुझीपर सो इन एआर इन मीडियम यस कौन लिखुच बर्तमान ऑब्जर्व करो सपोज दीज आर टू चार्जेस एंड देयर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज लेट इट बी R yes this is Q1 this is Q2 charge से फोर्स दो F Q2 also exerts same amount of force F on Q1 okay एटी भी सेम नौ नॉर्मली दुटा चार्ज देयर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज दैट इज R आठी चेंजेस कौन कली भितर मुझे मीडियम टे प्लेस करदेली देख भितर मुझे मीडियम रखिदेवी the space between two charges is filled in a medium और आम एमती कहीपर let these two charges are placed in a medium जो मीडियम से अच्छा yes think like this this is your Q1 this is Q2 now you can understand अच्छा Q1 Q को कौन कर फोर्स अप्लाई कला so Q2 also exerts फोर्स ऑन Q1 रिपल्सिव फोर्स देला बास सो क्वेश्चन है दीटा केस रे गोटे एआर गोटे मीडियम दीटा फोर्स कौन इक्वाल है सो सपोज मुझे देली इन एआर फोर्स एक्सर्ट कर एफ नॉट F0 कहबनी एफ नॉट एंड मीडियम रे केते कले लेट इट बी FM आम देखिए एक्सप्रेशन कौन हो देख एक्सप्रेशन केमती लिखा ओके सो इन एआर यू कैन राइट इट एज F इज इक्वल्स टू एफ नॉट इज इक्वल्स टू केते KE Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर सो आम तक लिखा डिटेल्स रे एफ नॉट इज इक्वल्स टू KE वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भल से ऑब्जर्व करो जो मीडियम कथा पड़े आसला आमर से कौन लिखा आम लिखा FM इज इक्वल्स टू ए मीडियम रो परमिटिविटी केते इप्सिलॉन ओके और इप्सिलॉन M को किंबा इप्सिलॉन को 1/4 पाई इप्सिलॉन ओके इप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर देखो आम सिंप्लीफिकेशन को नवा या सो FM कैन बी रिटेन अच्छा आम इप्सिलॉन M टाइप कौन लिखा इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R सो इट कैन बी रिटेन 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना मुझे तुम देख शेडिंग करके ऑब्जर्व करूँ देख तुमको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तार वैल्यू केते एफ नॉट देखा जाऊँगी इट्स वैल्यू इज एफ नॉट सो हम लिखिपर के FM इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन R और आम लिखिपर एफ नॉट डिवाइडेड बाय कही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यू मे राइट कैपिटल के यस
सो इप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मन रहा ताले कौन शिखिल एठू दुईटा चार्ज जो आम एयर और वैक्यूम अच्छा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छी जब आम किसी गोटे मीडियम आम प्लेस करदे से फोर्सटा कौन हम डिक्रीज हो जाऊँगी एंड द न्यू फोर्स बिकम्स एफ नॉट बाई के ये लैंग्वेज ये एक्सप्रेशन तू ठीक से शुणी था ये बहुत दरकार बर्तमान क्लीयर आई होप इट इज क्लीयर टू ऑल ऑफ यू देख सेपरेशन आम करदे भलसे डिस्टिंग्विश करके भलसे आम लिखिदे सो दैट डाउट जमी किसी न हुए ओके बस when q1 q2 is placed in medium when q1 q2 is placed in free space in air माने एटा कौन होची एटा हला एक्सप्रेशन when q1 and q2 are placed in free space and this is the expression when q1 and q2 are placed in medium yes okay this is the answer so आम देखा ये एक्सप्रेशन आम कौन देखले देख भल जिनसा आम स्टार्ट करवा नोट पॉइंट एक्सप्रेशन मन रहा कौन आम लिखले एक्सप्रेशन गोटे जिनस एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई के ओके और इप्सिलॉन आर यस सो आम ए के एक्सप्रेशन के लिखा के और इप्सिलॉन आर is equals to how much f naught by f or f naught by fm this is the expression अच्छा आम ए सिंपली आम पढ़ी जस्ट टिके आगु इप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर सो इप्सिलॉन आर केते हम एथरू इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नॉट बुझेला नहीं बस ताले इप्सिलॉन आर मीन्स ये कौन लिखा आम इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कौन सा कैपिटल के इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर इक्वल टू दिस मच इप्सिलॉन एन बाई इप्सिलॉन नॉट तारे आम ये सिंपली कंबाइन करी फॉर्मूला लिखि परिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम ओके और इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ एफ नॉट बाई एफ बढ़िया फॉर्मूला मिलला हमको एफ नॉट कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस ओके एंड एफ इज द एफ एम इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम क्लियर एंड ये मन रख इंपोर्टेंट पॉइंट दिस इज योर फास्ट पॉइंट नोट फास्ट पॉइंट कंप्लीट है नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखा नेक्स्ट पॉइंट बढ़िया पॉइंट लिखा देख ये सब इंपोर्टेंट नोट देली मैंने सब इंपोर्टेंट ओके इप्सिलॉन आर और कैपिटल के और इप्सिलॉन आर रो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसियो फॉर वैक्यूम यू रिमेंबर दिस थिंग वैक्यूम इप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1 फॉर वाटर इप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 81 यस और केतरा बरे 80 भी लिखा हो सो फॉर हम देखिए कंडक्टर दिस इज फुली इंपोर्टेंट you remember epsilon r is equals to infinite okay हम कही थी नोट पॉइंट मीन्स सब दब मन रख ठीक से सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर दैट इज इनफाइनाइट आई होप अप टू दिस यू ऑल हैव नो कंप्लेन यस सो आम एक्सप्रेशन देख केते सिंपली आम डिस्क्राइब कले ठीक से एटा पार्टीशन मु करदेली सो दैट तुम इजिली ग्रास्प कर परियो यस सो कुलम्स ला देखो आम धीरे धीरे पाठ भर एंट्री करिकी केते बाट पर्यंत आसले एक्सप्रेशन केते इजी थिला एफ इक्वल टू q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के ई ओके किंतु सेमती नहीं आहरी ता भितर डिटेल्स आम स्टडी कले अच्छा ये आ गोटे जिनस मन रख इप्सिलॉन आर रो यूनिट कौन हम इप्सिलॉन आर रिमेंबर इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस एटा आम आगु लिखबार थिला इप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस आल्सो dimensionless yes now epsilon m and epsilon naught both are having same unit and same dimension clear okay ताले हम कौन शिखिले नोट पॉइंट में देखिबा नोट पॉइंट 4 में देखिले जे कौन लिखिबा हम लिखि परिबा आज
as Fm is equals to F naught by K or F naught by epsilon R. I will explain force in a medium decreases by 1 by epsilon R times of force in free space. मन रहा बढ़िया से मन रख यार को आम कनक्लूजन लिखिपर दस फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस बाय 1 by epsilon R times of force in free space. Yes, if condition separation between Q1 and Q2 remains same, charge same thibo, separation भी same thibo. If separation between Q1 and Q2 remains same, देख लो एबे तो आसीबो धीरे धीरे हमें एंट्री करछे बढ़िया जिनिस सब पढ़िबा देखो क्लियर. अच्छा नोट पॉइंट 5 लास्ट नोट पॉइंट हम आ बहुत तगड़ा नोट पॉइंट भी हमें दबा तार एक्सप्रेशन लिखिपर तो एफ एम एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कौन हम एफ एम इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon m इंटू Q1 Q2 by R square that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon R Q1 Q2 by R square. हाँ बहुत बढ़िया नोट पॉइंट आम पढ़ा कौन नोट पॉइंट नंबर 5 लास्ट नोट पॉइंट बर्तमान मुझे कौन कली देख Q1 नेली Q1 चार्ज Q2 चार्ज बस दिस इज योर चार्ज Q1 दिस इज योर चार्ज Q2 yes and their center to center separation is R is their center to center separation. बढ़िया नोट पॉइंट तो निहाती फोकस करी मन रख कॉपी इमिडिएटली तक मेंशन करियो. अच्छा बर्तमान या भीतर किसी गोटे मीडियम अच्छी ओके नाउ ए सर्टन मीडियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम केमती देख एति अच्छी मीडियम दैट मीन्स ये कौन शिखिल मीडियम इज पार्शियली फिल्ड ए मीडियम रो थिकनेस केते टी एंड यार रिलेटिव परमिटिविटी दिस इज इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी केते अच्छी इप्सिलॉन आर और के so medium is inserted partially बर्तमान कौन हम Q1 exerts Q2 force upon Q2 and Q2 also exerts force upon Q1 it is Fm એટલે Fm रो एक्सप्रेशन रो वैल्यू केते कीप इट इन माइंड very important ओके तो ता वैल्यू केमती हम देख इट्स वैल्यू इज Fm is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by बहुत भल से मन रख Q1 Q2 divided by R minus T plus T into epsilon R root over whole square. This is that expression. Okay या बहुत प्रिसाइजली लिखो मन रख ओके बस दिस इज आवर लास्ट नोट पॉइंट. सो रिगार्डिंग परमिटिविटी किसी आइडिया हो गला नहीं कह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी ये सब जिन निहाती जानवा आमर दरकार थिला क्लियर यस सर नो कह यस ओके. सो नेक्स्ट आम जा कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को सो लिखि दिए तक सब ठीक से लिख ओके परमिटिविटी टू स्टार्ट कली ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज नेक्स्ट पेज इज दिस वन यस. अच्छा ये डिफरेंस पड़े आसला ये आम डिफरेंस मुझे स्क्रीन को देख छोट करदेली ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट देन दिस इज द एक्सप्रेशन नोट पॉइंट 1 and 2 next note point 3 and 4 this is our note point 3 and 4 okay and this is our last note point 5. तो नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ ठीक अच्छे. नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ. सराउंडिंग जहाँ भी नॉइज आसला तक अवॉइड करवा ओके. सो मुझे देली दिस इज योर वाई एक्सिस दिस इज सपोज एक्स एक्सिस yes and this is origin and there are two charges
two charges. Listen, wait. Okay, and there are two charges as per this figure, Q1 and Q2. Yes, so tell this is your charge Q1, this is charge Q2. अच्छा, Q1 Q2 ର position vector କେମିତି ହେବ? So position vector direction always from origin to that point. So let R1 vector is the position vector of Q1 and R2 vector is the position vector of Q2. Okay, बस. अच्छा, Q1 Q2 भितरे सेंटर टू सेंटर सेपरेशन केते? सेंटर टू सेंटर सेपरेशन लेट इट बी R. अच्छा, आउ कौन हम ये Q1 एक्जेक्ट कर फोर्स अपन Q2. सो Q2 पर फोर्स पड़ा देख, दिस इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1. ओके, देन Q2 also exerts force on Q1. This is your force on Q1 due to Q2. F12 vector, F21 vector. मन रहा ठीक से बस. अच्छा, ये हमें बहुत सारे जिनस पढ़ले टे लिखिदेवा. सो what is R1 and R2 vector? R1 vector and R2 vector. These are the position vectors of Q1 and Q2 respectively. And आउ कौन देखिले हमें F12 vector. So this is force on Q1 due to Q2 and F21 vector. This is force on Q2 due to Q1. Yes. अच्छा, बर्तमान मुझे पचारि एक्सप्रेशन रे गोटे भल जिन पचार. यहाँ सपोज पॉइंट ए दे देली, Q1 is placed at point A, Q2 is placed at point B. ओके, अच्छा मुझे ट्रायंगल अप्लाई करी देख भल जिनस मुझे करुँची. यहाँ है O, दिस इज आवर A पॉइंट सपोज एंड दिस इज आवर B पॉइंट. ओके, बस दिस इज R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर. बढ़िया से बुझी कह R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर. सो ये जब ड्र करी कौन AB वेक्टर, यहाँ है AB वेक्टर बस, और नहीं था BA वेक्टर. बर्तमान BA वेक्टर, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस सेपरेशन इज इन बिटवीन A एंड B, इट इज R इन मैग्नीट्यूड. सो जदि आम देखा कौन ट्रायंगल लो, एज पर ट्रायंगल लो, एज पर ट्रायंगल लो, एज पर ट्रायंगल लो जहाँ कहल दुईटा वेक्टर देख थी आम सेम ऑर्डर रे किए किए अच्छा R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर. तो व्हाट इज BA वेक्टर वैल्यू? BA वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. यस, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर यहाँ को आम सर्ट लिखा R12 वेक्टर. मन रहा R12 वेक्टर. तो B to A जो डायरेक्शन रहता है आम केम देवा R12 वेक्टर. यस, सो B to A आम डायग्राम रे देवा जो डायरेक्शन देखा ना B to A, यही डायरेक्शन देवा कौन R12 कैप. कैप रो मीनिंग है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर. मन पकाओ क्लास 11 रे पढ़ाई. दिस इज R12 वेक्टर. एक्जाक्टली जदि मुझे सेम फिगरटा देखली, देख तुमको सेम फिगर कली मुझे देदेली AB वेक्टर. बस कौ दुटा वेक्टर बर्तमान सेम ऑर्डर अच्छी, R1 वेक्टर एंड AB वेक्टर बोथ आर इन सेम ऑर्डर. सो फ्रॉम ट्रायंगल्स लो केते हेबो R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर. दैट मीन्स AB वेक्टर इज हाउ मच, AB वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. यहाँ कौन लिखा जीवो R21 वेक्टर. यस, दिस इज टर्म्ड एज R21 वेक्टर. तार माने AB रो डायरेक्शन A to B जदि डायरेक्शन देखा A to B, यही डायरेक्शन आम देवा कौन R21 कैप, R21 कैप गोटे, R12 कैप गोटे. ओके, सो फिगर बहुत इंपोर्टेंट, फिगर बहुत इंपोर्टेंट. अदरवाइज तुम वेक्टर फॉर्म लिखला बेले बहुत डिफिकल्टी फेस कर बुझे ना. सो किसी किसी बड़े उल्टा डायरेक्शन भी दिया होची. ओके, A to B R12 कैप भी लिखा होची, R21 कैप मुझे कहली. सो कन्फ्यूजन हेनी, मुझे बतैली बर्तमान ठीक से फॉलो करो, सो दैट न्यूमेरिकल आम यहाँ अप्लाई करवा ठीक से.
ओके सो ऑलवेज मन रख ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल रो केमती आसला। तो बर्तमान आम लिखा कौन फोर्स ऑन Q1 दस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ताको हम कौन लिखा एक्सप्रेशन F12 वेक्टर ये फोर्स गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार मैग्नीट्यूड अच्छी तार डायरेक्शन अच्छी बढ़िया से बुझ तार मैग्नीट्यूड केते हम KE Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर सेपरेशन बिटवीन Q1 Q2 इज आर दैट इज आर स्क्वायर तार डायरेक्शन कोड हम देख F12 वेक्टर डायरेक्शन क्या सहित मैच कर देखा देख लो पिक्चर देखिए आराम से जापर देख F12 वेक्टर डायरेक्शन जुआड़े अच्छी ना से डायरेक्शन तुम किए अच्छी R12 कैप बुझेगा R12 कैप सो आम लिखा के मैग्नीट्यूड लिखले ये डायरेक्शन लिखा R12 कैप बास एबे केमती चेंज करा जिनसा देख आम पढ़ीचे कौन फॉर एग्जांपल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ये मन पकई दूसरी जदि ए वेक्टर लिखाइली मु तार ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को लिखी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर मोड तार डायरेक्शन है ए कैप ताले ए कैप वैल्यू केते वेक्टर बाय वेक्टर मोड ओके मन पड़ा वेक्टर बाय वेक्टर मोड एमती आम लिखिपर के ई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर को आम लिखा कौन इंस्टेड ऑफ आर आम लिखिपर आर मीन्स R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड तार स्क्वायर ओके ये आर रो मीनिंग कौन है आर रो मीनिंग है R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड देन कैप रो मीनिंग कौन हम देख R12 कैप को आम कौन लिखा कहली कैप को आम लिखा वेक्टर बाय वेक्टर मोड R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड यस यहीटा ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सो बर्तमान देख एक्सप्रेशन केते हला के ई रो मीनिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय देख डिनोमिनेटर केते आसला R12 वेक्टर मॉड क्यूब इंटू R12 वेक्टर दिस इज द वैल्यू ऑफ F12 वेक्टर F12 वेक्टर क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू भल से बुझो कॉपी जो तुम लिख स्लो एंड स्टेप प्रोसेस बुझा चेष्टा कर एक्सप्लेन हो गला ठीक से नेक्स्ट सिमिलरली जदि हम लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 केते हम F21 वेक्टर ताको हम इजिली लिखिपर देख ये 1 2 थिला देन आसला 1 2 देन आसला 1 2 देख सीरीज केमती कंप्लीट है एक्जाक्टली आपको आम एमती लिखा केमती F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर मॉड होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर जमी प्रोसेस में ऊपरटा लिखिली ना F12 वेक्टर सेमती एटा लिख बुझे नहीं कह ताले बर्तमान देख ये R12 वेक्टर आ R21 वेक्टर जदि आम देखा कि आम देखा R12 कैप यहाँ को आम डिटेल्स लिखिदेवा कि देख तो नन जापर मु डिटेल्स लिखिदे आम लिखा जे F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर यहाँ कार वैल्यू मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन कुआड़े देख 21 रो डायरेक्शन F21 रो डायरेक्शन रे किए अच्छी देख पिक्चर देख F21 रो डायरेक्शन यहाँ तारी डायरेक्शन आम क्या मीट करुचे R21 कैप बुझेगा R21 कैप सो लिखा से R21 कैप केते इजी देख तो बर्तमान कौन करवा टे चेंजेस आनिबा डिनोमिनेटर पार्ट सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को लिखी R21 वेक्टर मॉड होल स्क्वायर एंड R21 कैप को कौन लिखी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर बाय वेक्टर मॉड R21 वेक्टर बाय R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड so now the final expression will become 1/4 pi epsilon naught then Q1 into Q2 divided by R21 vector mod whole cube into R21 vector this is your F21 vector है यहाँ आम फास्ट एक्सप्रेशन लिखुँ ना ये देख R21 कैप रे अच्छी यूनिट वेक्टर रे ये पूरा वेक्टर फॉर्मेट रहा एक्जाक्टली यहाँ भी देख सेमती यूनिट वेक्टर लिखाई यस सो ये देख R12 कैप और R21 कैप फिगर कौन अच्छी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन R12 कैप एंड R21 कैप बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन ओके ये मजा लगे लिखापी लगे बहुत डिफिकल्ट ये साइंस पढ़ न
ତାକୁ ଦେଖିବ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସେ ପୁରା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକ୍କର କାଟିଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଠ କେତେ ଦରକାର ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯଦି ବି ଭୁଲି ଯାଇଛ ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଓକେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ ସୋ ଲେଖିବ ବଟ୍ ସୋ ଲେଖିବ ଆଜ୍ R12 cap is equal to minus of R21 cap R21 cap which implies R12 cap vector direction में क्या अच्छी R12 cap direction में देखो क्या अच्छी R12 cap direction में F12 vector अच्छी तो हमें लिखी परिवा F12 vector is equal to minus of F21 vector. This is in accordance to Newton's third law. This is in accordance to Newton's third law. So this is in accordance to Newton's third law. This is in accordance to Newton's third law. केते भल से बुझिलो देखिलो सो फर्स्ट ईयर कांसेप्ट किसी ना किसी हमरो निहाती दरकार ओके ठीक अछि सो दिस इज अबाउट योर व्हाट Coulomb's law in vector form सो हम लिखिले कोन एटा ये मु गोटे केस चली हैला केस 1 कोन नै जी एटी देखो जण जण रिपेल करछि तो मते कहलो देखिया q1 q2 ग्रेटर दैन 0 ना लेस दैन 0 सो ऑब्वियसली रिकॉल q1 q2 लिखिबा एटी व्हेन केस 1 हला व्हेन केस 1 नाम हेडिंग देबा व्हेन q1 into q2 is greater than 0 सो बर्तन मु तुमको टास्क देली व्हेन q1 into q2 केस 2 लिखिबा तुम माने व्हेन q1 into q2 is less than 0 write the Coulomb's law in vector form ओके ये केस रे हमरो राइट तुम मेल आईडी देछि डिस्क्रिप्शन को जीवो मेल आईडी दिया सेठी हमरो तुम पोस्ट करियो तुम पिक्चर मेल रे पते पठेबो ओके मु तुम रिप्लाई देबी सो राइट Coulomb's law in vector form आज ओनली थ्योरी रिलेटेड कांसेप्ट सरी जीवो ओनली नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 टा ओनली न्यूमेरिकल रहबो होला इन वेक्टर फॉर्म बस आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके सो नेक्स्ट टाइम जीवा लिमिटेशन याकू स्क्रीनशॉट नहीं गलो नहीं जाई परबो स्क्रीनशॉट वेक्टर फॉर्म फर्स्ट स्क्रीनशॉट देन नेक्स्ट then force on q1 due to q2 next force on q2 due to q1 then how it satisfies Newton's third law okay next is limitations of Coulomb's law okay देखो बहुत भलो कांसेप्ट एठी अछि अवेलेबल limitations of Coulomb's law first is it is only applicable for तुम भावनी मुझे खाली लिमिटेशन टाक सेंटेंस लिख देगी क्लास माइंड अप कर देवी ना इट इज ओनली एप्लिकेबल फॉर स्टेशनरी चार्ज आज तुम बुझ ये लाइन को बेस करी केमती क्वेश्चन आसीपे इट इज ओनली एप्लिकेबल फॉर स्टेशनरी चार्ज देखो फॉर एग्जांपल मु बर्तमान नेली 4टा केस नेबी है फर्स्ट केस कौन कली these are two charges okay one is your q1 another one is q2 yes they are separated by a distance r आउ कौन अच्छी v1 is equals to 0 तमाने रेस्ट अच्छी v2 is equals to 0 this is first case clear एटा हमर फर्स्ट केस बर्तमान मते को एठी Coulomb's law applicable होबो ना नहीं देखो रेस्ट अच्छे माने q1 भी स्टेशनरी q2 भी स्टेशनरी ऑब्वियसली सो नेट फोर्स केते एठी f नेट हला इलेक्ट्रोस्टैटिक f इलेक्ट्रोस्टैटिक बस सो Coulomb's law is applicable which implies Coulomb's law is applicable ready okay next come to the second case कौन कुछ देखो सेकेंड केस रे हम कौन कले चार्ज दिला नेले q1 दिस इज q2 सेपरेशन इज r हाँ एठी कौन हला
Q1 it is moving Q1. So ये मन रख Q1 रो V1 is not equal to 0 but V2 is equal to 0. ता माने कौन कहूँ कह तो Q1 in motion. So ये केस को हम स्टडी करिबा Q1 is in motion and motion means it produces electric field. यदि मोशन अच्छी मन पकाओ इलेक्ट्रिक फील्ड आ कौन प्रोड्यूस कर मैग्नेटिक फील्ड बस. एंड Q2 इज एट रेस्ट दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. मन पड़े कहला चार्ज मोशन को आसला मैंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कर बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सहित इंटराक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सहित इंटराक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कले भी सहित इंटराक्शन कहीं ना चार्ज Q2 ताको साथ दौनी तो नेट इंटराक्शन के नेट इंटराक्शन हम तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक. दस एफ नेट इंटराक्शन दैट विल बी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है. सो यही केस आमर कूलम्स लॉ सैटिस्फाई हम. सो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस केस. एग्जैक्टली सेकेंड केस फिनिश्ड. थर्ड केस कम टू थर्ड केस. So third case कौन कहूँ थर्ड केस कहला these are two charges same Q1 and Q2 separation is R है separation is R. एठी किंतु कंडीशन चेंज कर देला Q1 रो V1 0 ओके बट Q2 V2 not equal to 0. दैट मीन्स आम एक्सप्लेन कौन करवा ये आम एक्सप्लेन करवा जे Q1 is at rest and rest means it produces electric field. Thus and Q2 V2 not equal to 0 means Q2 is in motion. Motion means it produces both electric field and magnetic field. बर्तमान देख Q1 रो इलेक्ट्रिक फील्ड सहित इंटराक्शन किए कर Q2 रो इलेक्ट्रिक फील्ड कि Q2 रो मैग्नेटिक फील्ड को इंटराक्शन हो पारनी किसी ने कहीं ना ताले नेट इंटराक्शन कौन है नेट इंटराक्शन इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. नेट इंटराक्शन इज आवर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बुझेला. नेट इंटराक्शन इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो इज इम्प्लाइज कूलम्स लॉ कौन हम एप्लीकेबल देख लो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल. वॉइस ठीक ठाक सुना तो टोटाल सराउंडिंग्स पूरा साइलेंट अच्छे वॉइस भल सुना जाऊ आई होप सो. सो नेक्स्ट आम जा कौ कलर नवा देख गोटे अदर कलर नवा आम यस. सो केस नंबर 4 केस नंबर 4 रे कौन करवा केस नंबर 4 रे दुटा चार्ज नेली बस ये कौन देली दिस इज Q1 दिस इज Q2 ओके. ये भी जाऊँगी V1 नॉट इक्वल टू 0 हियर ऑल्सो V2 नॉट इक्वल टू 0. कौन लिखा देख सो Q1 कौन Q1 is in motion. If Q1 is in motion it produces both electric field and magnetic field बुझेला. again Q2 is in motion. as Q2 is in motion it produces electric field as well as magnetic field. मन रख ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 इंटराक्शन करेंगे and magnetic field of Q1 interacts with magnetic field of Q2. ताले ये हमरो कौन देख लो नेट इंटराक्शन आम कहीपर एफ नेट कौन हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो पार प्लस एफ मैग्नेटिक भी हो पार. सो ये देख मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉम्बिनेशन आसला दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. सो ये हमर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हम ना. सो व्हिच इम्प्लाइज कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. ताले 3-4टा केस हम जो देले देखिले कौन शिखिल 4टा केस रो जो इंटराक्शन पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रोचे नेट इंटराक्शन से तुम कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हम. दिस इज केस 1 केस 2 लिखिदेवा दिस इज केस 2 देन केस 3 यस लास्ट वन इज केस 4 देख लो. तो गोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करवा के डिफिकल्ट हो. सो डिटेल स्टडी निहाती दरकार अदरवाइज तुम कम्पीट करवा बड़ा मुस्किल हे. नेक्स्ट जी आम
कौन आम पढ़ुले लिमिटेशंस सेकेंड लिमिटेशन देख सेकेंड लिमिटेशन कौन इट इज ओनली applicable for point charges it is only applicable for point charges है देख एक्चुअली कथा कौन है यार दुईटा पॉइंट चार्ज नहीं गली देखल दुईटा पॉइंट चार्ज सो Q1 and Q2 सेपरेशन इज R बस तेल F के KE Q1 into Q2 by R square and ये फोर्सटा कौन सपोज लाइक चार्जेस बोथ आर लाइक चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 सो यहाँ रिपल्सिव फोर्स के इजिली एक्सप्लेन है देख अच्छा थियोरिटिकल कौन कौच थियोरिटिकल कौच आमर R is the separation between their center to center separation ताने थियोरिटिकल जो आम जावा थियोरिटिकल आस्पेक्ट को आम देखा तो सेंटर है दुईटा चार्ज देख यहाँ प्लस Q1 दिस इज योर प्लस Q2 बस यहाँ सेंटर C1 सेंटर C2 and the separation between the two center is R ताले एठी F केते so KE Q1 Q2 by R square बर्तन मु कहले ए फोर्सटा कौन दिस इज थियोरिटिकल दिस इज योर थियोरिटिकल एंड ये देख कौन हो एक्चुअली जेहेतु जन जन को रिपेल कर बर्तमान हम कौन प्रोब्लेम ये स्टार्ट है देख आज पर थियोरिटिकल आस्पेक्ट को जा ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन देयर सेंटर ऑफ मासटा कौन हो चेंज हो बढ़िया से देख सो ये लिखा आम ड्यू टू यही थियोरिटिकल आस्पेक्ट को जा सो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन position of center of mass changes बस सो चेंज है डायग्राम केम देखा देख सो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बर्तमान चेंज हो गला सो आम डायग्राम केमती करवा बर्तमान आम डायग्राम एमती करवा जमी पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन हम चेंज हो गला केमती चेंज हो जन जनक रिपल्सिव फोर्स पकेला सो यार सेंटर ऑफ मास टी एपट को शिफ्ट हो आसला यार सेंटर ऑफ मास देखो टुवर्ड्स साइड शिफ्ट हो गला ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन आ चार्ज गुड़ा केमती हो चार्ज गुड़ा बर्तमान से लगे लगे रे ये डिस्टेंस अपार्ट ये सेमती डिस्टेंस अपार्ट ये बर्तमान क्लम्ब हिसाब से एंड न्यू सेपरेशन केते गला C1 और C2 भितर R डैश ताले ये कौन देखुच ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कह तुम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके ताले ये देखिले R डैश और R यहाँ प्रैक्टिकल केस थियोरिटिकल मुझे कहली यहाँ प्रैक्टिकल केस सो ये कौन देखिले आम R डैश और R भितर रिलेशन कौन आसला 10 R डैश इज ग्रेटर दैन R ताले F रो फॉर्मूला कौन F और R भितर रिलेशन कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल F एंड R बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताले आम कौन लिखा R डैश रो करेस्पोंडिंग फोर्स केते F डैश ये फोर्सटा केते लिखी ये करेस्पोंडिंग फोर्स है F डैश ताले F डैशटा कौन हम R डैश इंक्रीज माने F डैश डिक्रीज हो F डैश इज लेस दैन F बुझेला F डैश इज लेस दैन F तुम एक्जाक्टली तुम कर यार नेक्स्ट केस दुईटा सिमिलर चार्ज लाइक चार्जेस नहीं ओके माने प्लस प्लस नहीं गली जब मुझे प्लस माइनस नहीं जी तो इजिली तुम बुझीपार तो कौन हम प्लस माइनस नहीं गला माने व्हेन Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव बढ़िया से देख लो Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव बर्तमान यही केसटा थिला Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव पॉजिटिव ओके एंड Q2 नेगेटिव बस सो दिस इज योर प्लस Q1 दिस इज माइनस Q2 एंड देयर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज योर R C1 to C2 सेपरेशन इज R बस सो ये F वैल्यू के KE Q1 into Q2 by R स्क्वायर बर्तमान भर कौ फोर्स रट्राक्टिव फोर्स ओके अट्राक्ट है मैंने ये अट्राक्ट कर सपोज F फोर्स अट्राक्ट कला ये लास्ट चलाऊँ लाइन जॉइनिंग सो यहाँ है तुम F दिस विल बी द F सो ये अट्राक्टिव फोर्स ड्यू टू द म्यूचुअल अट्राक्शन ओके यहाँ थियोरिटिकल दिस इज द थियोरिटिकल केस ओके सो ड्यू टू म्यूचुअल अट्राक्शन
position of center of mass changes. Position of center of mass changes. So position of center of mass जो change हो गला डायग्राम केम जाओ देखो. So position of center of mass changes. So बर्तमान नहीं गली बर्तमान कौन Q1 Q2 आम नहीं गले बस बर्तमान कौन हम C1 टी के एपट शिफ्ट हो टुवर्ड्स राइट एंड C2 टा एठी रही जीवो. So this is the separation R dash. ताला R dash कौन है लाइट कमी गला. Obviously R dash कमी माने यार corresponding force कौन थी वो repulsive attractive force. ओके ये कौन कर जन को अट्रैक्ट कर F dash ये है F dash. ओके एठी चार्ज गुड़ा केमती स्प्रेड हे कहलो देखिया एठी पॉजिटिव क्लमजी एठी फार अवे लाइक दिस एठी सेमती क्लमजी फार अवे. सो आम एटी कौन देखले R dash इज लेस दैन R ताले R dash रो करस्पोंडिंग फोर्स को F dash इज ग्रेटर दैन F. ओके सो मन रखो F dash कौन ऑब्जर्व्ड फोर्स आउ F टा थियोरेटिकल फोर्स है. सो आई होप इट इज ओनली एप्लिकेबल फॉर पॉइंट चार्ज देखल ना ताकू इजिली लिखिदेटा किसी ना ताकू ठीक से बुझा दरकार है ता अंडर में गोटे पॉइंट एक्सप्लेन कली. नेक्स्ट टाइम जा कौटी थर्ड पॉइंट. यस कम टू थर्ड पॉइंट मीन्स लिमिटेशन. थर्ड लिमिटेशन नंबर 3 सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज. द सेपरेशन बिटवीन 2 point charge should be greater than 10 to the power minus 15 meter. ताले सेपरेशन 10 to the minus 15 to less है जीवो ताले हबो कौन if distance is less than 10 to the power minus 15 meter, then remember nuclear force will active, which is nuclear force is the strongest force in the nature. So electrostatic comparison that is very strong. Okay, so which is stronger than electrostatic force. I hope it is clear to all of you. These are the limitations of Coulomb's law. So ताको screenshot नहीं जीवा देखो first limitation it is only applicable for stationary charge. Okay, so हमें 4टा केस एटी डिस्कशन कले बहुत भल जिनसा आम देखिले भल क्वेश्चन पाइले आम है ना नहीं. नेक्स्ट इट इज ओनली applicable for point charges. तार भी गोटे एक्सप्लेनेशन देखिले थियोरेटिकल फोर्स आउ ऑब्जर्व्ड फोर्स विथ रिलेशन केमती आसुची. And this is the concept. Yes, bas you can take the screenshot. And separation रो condition कौन हो दरकार सेटा भी बहुत important. So with this your limitations of Coulomb's law पूरा सरी वाला ठीक से. नेक्स्ट गोटे थियोरेटिकल टॉपिक अच्छी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्सेस Coulomb's फोर्स. तार सिमिलारिटी कौन डिसिमिलारिटी कौन. ओके theoretical. नेक्स्ट क्लास मीन्स लेक्चर नंबर 4 पे रेडी रुह न्यूमेरिकल. सो लेक्चर नंबर 4 पूर्व तुम लेक्चर नंबर 3 सब पढ़ी आसो ठीक से सो दैट क्लास बहुत भल लगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्सेस Coulomb's फोर्स. Yes, so first we will discuss regarding the similarities. दीटा भीतर सिमिलारिटी कौन बहुत इंपोर्टेंट 1 मार्क पाई परिबे आसोसन रीजन क्वेश्चन भी आइ जो. सो बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ता देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन F is equal to G m1 m2 by r square and F is equal to Coulomb's force Ke q1 q2 by r square. both देखो F proportional to 1 by r square. So this is called inverse square law. So both obeys inverse square law.
Yes, then come to second point. Both follow principle of superposition. Okay, 5 number class lecture number 5 रे हम डिस्कशन करबा both obey principle of superposition. Okay, next कौन next ला third similarity. They are central forces acts along the line joining centers of the two masses or two charges P. Then come to point number 4. They are conservative forces. First year पढ़ाई conservative work energy power. They are conservative forces. Okay, ये path पर depend करिवनी initial और final position नहीं depend करिवो. That means another one thing, in conservative case, in a cyclic path do work done, total work done केते हो 0. Then come to point number 5. They follow Newton's law of action and reaction. हम देखिले भी they follow Newton's law of action and reaction. Yes, these are the similarities between these two forces. Then we will discuss regarding their dissimilarities. Yes, देखो dissimilarities. Okay, so dissimilarities first में पढ़े left side लिखिए gravitational and in right side we will discuss electrostatic. Okay, so remember gravitational case रे ये फोर्स हमरो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम दुटा मास भितर जहाँ मीडियम आसले भी और फोर्स किसी चेंज हेनी. सो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम आज आम डिस्कसन करते कूलम फोर्सटा कौन है डिपेंड्स ऑन मीडियम. सो ये डिपेंड्स ऑन मीडियम. देन सेकेंड कौन सेकेंड लिखा छोट जिनटे कहूँ मन रखिदेव कौन मिडिटी. अच्छा सिंपल पॉइंट अच्छी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव. बहुत सिंपल ऑलवेज अट्रैक्टिव. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. yes, next is point number 3, that is mediating particle. Okay, in case of gravitational force mediating particle is graviton. Mediating particle is graviton. And in point number 3 in this case you may write mediating particle is photon. या विषय हायर क्लास रे डिस्कशन हम. mediating particle is photon. Just for point फाइन लिखिली. Then point number 4 ना 0 वैल्यू के 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड एथरे हमरो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एथरे के कूलम्स कांस्टेंट वैल्यू 9 into 10 to the 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर Coulomb square. Okay, so these are the dissimilarities between these two forces. I hope it is clear. Dissimilarity similarity भल से बुझल. मुझे की जान छाड़देवी जमती कि नेक्स्ट क्लास में ओनली न्यूमेरिकल ही करवा. यस, नेक्स्ट क्लास टू ओनली न्यूमेरिकल ही हम. सो आई होप आम मैक्सिमम थ्योरी कवर कले. यस, regarding your Coulomb's law. Next न्यूमेरिकल पे जहाँ सब दरकार ना ये तुम कंप्लीट कर दियो. नेक्स्ट आम करवा कौन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन Coulomb's law. आहरी गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी एफ वर्सेस आर ग्राफ तार रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आसो. ओके, सो आ 2-3टा नोट पॉइंट अच्छी इंपोर्टेंट पॉइंट ताको आम डिस्कसन करवा. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एंट्रेंस पर्पज ओनली. देन आम न्यूमेरिकल्स करवा कार Coulomb's law न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा. यस, ओके, सो आई होप आज सेसन समस्त क्लीयर आसो क्लीयरली बुझीपार तुम मैंने. यस, थैंक यू. हैव ए नाइस डे एंड वेट फॉर नेक्स्ट
lecture, that is lecture number 4. So comment through रे तमे निहाती description box को जाइकी तमे मेल आईडी देछि तमे डाउट पचारि परियो किछि असुविधा नहीं. अगेन याकू शेयर करो ठीक से सो दैट जो मैंने नीडी थी हेल्पफुल तंग हम सेटा. सो समस्ते बर्तमान लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टे करियो चैनल को सो दैट हम चैनल को ग्रो हो पॉजिटिवली ग्रो हो. ओके ओके. सो थैंक यू. हैव ए नाइस डे.